की बात करते हैं जो आज थोड़ी सी हरियाली में था, वो है चीनी कंपनियां। शुगर के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में 12 साल की ऊंचाई पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इससे क्या संकेत लिया जाए, कितनी और बढ़ सकती है दाम, इस सब पर बात करते हैं शक्ति शुगर्स के सीएमडी मिस्टर एम मणिकम। मिस्टर मणिकम, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। क्लियरली इंटरनेशनल मार्केट्स में आसमान छू रहे हैं भाव, इसका कितना फॉलो थ्रू भारतीय प्राइसेस में देखने को मिला है, अगर उसका एक अंदाजा पहले दे सके। See, India is artificially controlled market. Okay, we have closed borders, open borders as the government decides. And even today, I think we are selling sugar about 37 rupees, whereas the world market is at 60 rupees. Okay, so ideally we should be allowed to export and get the benefit to the farmers. But we are not allowed to export and also give a higher price to farmers. So today the production has come down, one on account of drought, and where there is a possibility to produce cane, we are not able to produce because we are not paying enough to the farmers. But this has been a problem for the last 75 years, ever since we got independence. I think we've never had a stable sugar policy. Every time we had a stable sugar policy and then something happened, everybody would change the policy again. So to my knowledge, I've been in the industry now for almost 45 years, and I've seen about 10 policies, right? So I think the sugar prices will go up a little more, and the government has stopped exports. So we will probably be a closed market, and they cannot import sugar to bring the sugar prices down. They should allow the sugar prices to move up. But today, actually, if you look at the cane price of something like 2,700, our sugar should be about 45 rupees. So we are still at 37. So we are below parity. ओके मिस्टर मणिकम, एक और चीज़, अभी तक पिछले लास्ट 2-1.5 महीने में डिमांड कैसी रही है, और क्योंकि फेस्टिवल सीजन अभी हमारे आगे खड़ा हुआ है, अभी डिमांड और कितनी पिकअप हो सकती है। और एक और चीज़ सर, वो जो शुगर केन अवेलेबिलिटी है, क्या वो भी काफ़ी कम है इस वक्त? इस पर आपकी टिप्पणी, योर टेक? Yeah, there is a drought, and so the sugarcane availability is coming down, one, but the costs have gone up. Labor costs are going up. And, this festival is a story which we hear every year. We get the festival every time. And today you are buying, let's say, a mithai at 500 rupees a kilo, and sugar is costing about 40 rupees a kilo. So sugar is hardly the cost of, the one which drives up the cost of mithai. What is driving up the cost of mithai is ghee and dalda and everything else. But so, everybody blames sugar. I would think the government should take a more pragmatic policy and not talk about, festivals and shortages and all that. They should allow a good price to go to the farmer so that we can get a better price. And also now with the fuel prices going up, there's a lot more diversion going into ethanol. So you will have a lot of pressure coming in through the energy source also. I was just coming to that, Mr. Mahalingam. And of course, everyone blames sugar. It's because that it's an easy target. It's a low ball when it comes to putting on weight as well. But the ethanol prices, Brazil ethanol की कीमतें करीब 3 महीनों के हाईस पर है. Is that going to be a driving factor further for ethanol prices? And are you especially for Shakti Sugars, are you diverting more sugar towards ethanol in the future? Are you ramping up production of ethanol? No, in Tamil Nadu, most of us don't produce ethanol. Most of us on sugar. So we sell more alcohol and sugar. So we don't have a huge ethanol production in Tamil Nadu. Most of the ethanol for Tamil Nadu comes from Maharashtra. The reason why the energy prices are going up now is this problem in the Middle East. Okay, so you're seeing suddenly there's a flare up in the Middle East. The oil prices are moved up by about $15-20. And today there's a clear switch between energy crops and energy and oil prices. So you see the change happening very quickly. So they should allow this to track the market price rather than keeping. In fact, sugar should have been around 50 rupees even a year back. And we were selling at 30-35 rupees. So obviously we couldn't encourage the farmers to come through. So this is a problem which is man-made, in my opinion. I completely get it. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए मिस्टर मणिकम। तो क्लियरली चीनी की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन भारत में इन कंपनियों को शायद उतना मौका नहीं मिलेगा प्राइस हाइक करने का, कंसिडरिंग यहाँ पर सरकार ने एक तो कर्ब्स एक्सटेंड कर दिए हैं एक्सपोर्ट पर,
और ऑफ कोर्स भारत में कितने आप चीनी के दाम बढ़ा पाएंगे, स्पेशली त्योहारों के सीजन में। स्टॉक्स आपके सामने थोड़ी सी हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई जरूर दिए हैं। गौरांग, आपकी क्या राय रहेगी चीनी कंपनियों पर? देखिए हर्षदा जी, दिक्कत यही है कि दाम बढ़ाने में बहुत कठिनाई होती है। सरकार के तरफ से कोई ना कोई नीतियों में परिवर्तन किया जाता है और प्रतिबंध लगाया जाता है। इस साल क्योंकि बारिश की मौसम में किल्लत थी और 3 बड़े राज्य हमारे भारत देश में जो सबसे ज्यादा गन्ना उगाते हैं वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका। जाहिर है, जब गन्ना कम उत्पादन होता है तो चीनी की किल्लत भी होती है और उसी के कारण सरकार अपनी नीतियों में बदलाव करते हैं और प्रतिबंध लगा देते हैं। एक समय पर बलरामपुर चीनी पर कवरेज थी, लेकिन हमारे लक्ष्यांक आने के बाद उसको निकाल दिया गया है। तो फिलहाल कोई स्पेसिफिक कवरेज नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी उन सब कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए जिनकी बैलेंस शीट मजबूत हो, डेट को लेकर के समस्या थोड़ी कम हो। देखते हैं यहाँ पर क्या रुझान फिर आगे बनता हुआ दिखाई देगा। चीनी स्टॉक्स आज तो होल्ड आउट कर रहे हैं। अच्छा, चीनी स्टॉक